Hello everyone, welcome back to my channel Unlock Psychology with Shweta. I know it has been an absolute long time जब हमने अभी तक जो है लाइव सेशन नहीं किया था. So this is the reason I decided that let me give you all a quick surprise and do a quick catch up on my channel, which is Unlock Psychology with Shweta. I've also put it up on my Instagram, and I hope I get to see and meet people from my Instagram as well over here. So you can just write hi in case you're listening to me, and in case you're watching this, because it's been absolutely longest period of time that I've seen you. How is your preparation going on, guys? How's everything going on? तैयारियां कैसी चल रही है? Term 2 is about to come. You know, I know a lot of people have बहुत सारी apprehensions, बहुत सारी घबराहट, and कई लोग बहुत excited हैं, but unfortunately there's a dearth of question papers. So don't worry, guys, because there are dearth of question papers. मैं in my coming video, I will be sharing more and more sample papers with you all, so that you guys can get to have more practice of term 2 sample papers. So I hope उससे आप लोगों को help मिलेगी, और you'll get more exposure towards learning, or towards understanding how to attempt your long question answer type questions. And definitely I will also have a full-fledged session on that as well. So I have Mohammad Ilyas who's saying hi, how are you? Hi Mohammad, I'm doing pretty well. How are you doing? Nitin Sahu is also saying good evening, ma'am. Good evening, Nitin. How are you doing, dear? मोहम्मद कह रहे हैं कि मैम प्लीज टेल इफ यू हैवंट डन एनीथिंग ऑफ साइकोलॉजी टिल नाउ, प्लीज गिव सम टिप्स. ओके, डोंट वरी, यू नो व्हाट, अगर अभी भी नहीं किया है सो देयर इज स्टिल, ट्रस्ट मी, कोई देर नहीं हुई है, बहुत टाइम है. एंड आराम से तैयारी हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. एग्जाम्स 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लाइक 26 अप्रैल, दैट्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, सो you need not have to worry about it. Okay, और स्टेप बाय स्टेप शुरू करो. चैप्टर्स बहुत कम है, ट्रस्ट मी, 2 पूरे चैप्टर्स आ रहे हैं, और जो लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं 4 में से, उसमें से तो 50% सिलेबस भी नहीं आ रहा है. तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है या अनअचीवेबल है. ओके, दैट्स द रीजन आई वुड से कि अभी भी देयर इज, और अगर मैं प्रैक्टिकल की भी बात करूँ तो प्रैक्टिकल भी एक ही लिखना है. तो ऐसा कुछ नहीं है ऑन दिस अर्थ दैट यू कैन नॉट अचीव अभी भी. ठीक है, सो मोहम्मद, रिलैक्स, अपनी मेहनत करो, अभी अपनी तैयारी शुरू कर दो, अभी भी देर नहीं हुई है और कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ बहुत स्मूथली सेल आउट होने वाला है. डोंट वरी. सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय एंड फॉर यू. Practical viva would be from syllabus. Absolutely, it is going to be from the syllabus, and in the coming time you will get to see lots and lots of videos from my end which is going to be related to practicals. Okay, and I hope that would help you. Anamika is saying really long time. Anamika, I know, I did my live last, it was 1st of January, and now it's March. So yes, it has been the longest gap I have given for my live session. I was absolutely caught up in so many things in my life. If you're following me on my Instagram, I'm sure you'll get to know why so much of delay happened, and why you did not get to see me on on my live sessions for such a long time. In case you're still not following me on my Instagram, you can. My Instagram handle is @Unlock Psychology, guys. मुझे जाकर के follow कर सकते हो, and you can get to see a lot about my personal life as well. Okay. I know, Anamika, even I miss interacting with so many of you. I mean, मुझे ये देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने टाइम बाद लाइव आई हूँ और मुझे यहाँ पे इतने सारे comments मिल रहे हैं, questions मिल रहे हैं. So I'm feeling very nice and very good about it. So agar, also guys, if you have any questions, today it's an open platform. Today we're going to have a open conversation about anything and everything under the umbrella. So feel free to type, feel free to write, feel free to ask any kind of a question that you wish to on the chat box. Mohammad, so I have Ankita saying good evening. Hi Ankita. Farasat Nisar is saying hi. Mohammad कह रहा है कि
but ma'am, pre-boards are coming this week. So that's okay, yeah. Pre-boards has nothing to do with your board results. That's fine. आने दो. Pre-boards क्या बहुत बहुत सारे टाइप ऑफ एग्जाम्स आएंगे, प्रीलिम्स आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे. अब क्या करें, इनसे डरने का थोड़ी है, सब हो जाएगा. नितिन इज सेइंग, मैम मैंने सुना है कि एमफिल बंद हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत. अब मैं एमए साइकोलॉजी के बाद क्लिनिकल सो नितिन, दैट हैज ऑलवेज been there. एमफिल बंद हो रहा है, that is true for the subjects where it's not relevant. ओके ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं क्योंकि उनको नहीं समझ आता है कि क्या है क्या नहीं है. फॉर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिटरेचर का एक सब्जेक्ट देती हूँ, इंग्लिश. फॉर अ सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, एमफिल डिग्री इज बीच में क्वाइट फ्यूटाइल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, सो इन सच अ केसेस डेफिनेटली वहां पे इस सब्जेक्ट के ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए एमफिल को बंद कर दिया जाएगा अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. बट देर आर सब्जेक्ट्स जहां पे एमफिल की बहुत वैल्यू है, सच एज साइकोलॉजी, राइट. आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए एमफिल की डिग्री अटेन करनी पड़ती है. हेंस फॉर अ सब्जेक्ट लाइक साइकोलॉजी, एमफिल इज नॉट getting detained. Okay, so I hope that helps you, Nitin. So don't worry, agar you want to enroll yourself for the MPhil degree, or you have plans, or you've decided, go ahead. It is not going to get scrapped out or redundant in the coming time, so don't worry at all about it. I hope that helps, and I hope you get the answer for your question as well. Ma'am, have you currently completed your PhD degree? Absolutely, yes. Yes, the answer is a big yes. So, I certainly have completed my PhD thesis. I have been doing for quite some time. I have also made a video wherein I spoke about my whole journey towards becoming a doctor, or how you, in my next video, I also made it like how you can become, you can step-by-step methods to attain your PhD degree as well. So I have made these two type of video on my channel. If you haven't seen it yet, you must go and watch it. मेरी पूरी journey के बारे में, which has been quite up and down. I have spoken about it, and also आप किस तरह से you can be a part of it. So yes, certainly you will get to see a lot. That's quite a long video. मतलब मेरे ख्याल से 20 मिनट टच हो रहा है. But ये है कि I mean, I have spoken my heart out in the video. So yes, you can watch it. Nitin is saying thank you, ma'am. Most welcome, Nitin. And I'm there to help as and when it is required. So that's it. And also guys, term 2 की preparation सबकी full swing में होनी शुरू हो जानी चाहिए अब तक. Okay, in case you people have not started studying, please begin your preparation. Exams 100% offline हो रहे हैं. I mean, at any cost, you people are not going to sit at home and write your exams like what happened for class 11th and other sections this time. So I am dead sure कि अब जब बोर्ड होंगे आप लोगों को, again you'll have to go to the center, you'll have to write the exam, and then your result is going to be out. There was a major reason why the results for term 1 was not declared, because mostly उनको ऐसा लगा कि कई टीचर्स ने जो है हाय निकिता ऐसे in general, it's a general conversation that we're indulging in today. So because I'm meeting you all after a very very long time, so that's why. Yeah, so क्योंकि not कई बच्चों का, क्योंकि जो सेंटर था वो अपने ही स्कूल्स में पढ़ा था सभी लोगों का, right? मतलब all of you had gone to your own schools and wrote the term 1 board examination. So उसकी वजह से क्या हुआ था, ऐसा CBSE तक रिपोर्ट गई कि कई teachers have given a lot of favors to the students, like in a sense telling them literally all the answers. I don't know whether that happened with you people or not, but कई schools के अंदर ऐसा हुआ था कि teachers ने literally हर सवाल का almost पूरा जवाब बच्चों को बता दिया था, जिसकी वजह से board had decided not to declare the results for term 1, and I think term 1 और 2 का result वो इकट्ठा declare करेंगे
मॉडरेशन करने के बाद, जो मुझे समझ आता है. सो moderations are going to happen, and I think, I'm not sure, because now that they have time, now that everything is open, you might also get a you know a centers where you would go and write your exam. So maybe there will be a lot of changes that you would observe in the coming time. So let's see, let's keep your eyes and mind open, and देखते हैं क्या होता है धीरे धीरे. Ma'am, can we do 2 degree alternative like MA psychology, and after then in the next year MBA and all that? Yes, you can do that. It's just that एक ही साल में आपके पास 2 degrees आप शो नहीं कर सकते, बट अगर आप one after another 2 degrees को स्टार्ट कर रहे हो तो वो पॉसिबल होता है. Because I myself have done it. Like I was doing my PhD, and in between मैंने अपने आप को B.Ed में enroll किया था. So I have a B.Ed का degree, and after few years I have a PhD का degree. So ये possible है. Okay, ऐसा नहीं होता. It's only that in the same year you cannot show 2 degrees. वो invalid माना जाता है. और अब वो भी डिपेंड करेगा कि आप MA रेगुलर दिखा रहे हो कि MBA रेगुलर दिखा रहे हो. कुछ एक सीन वहां पे भी आ जाता है, बट यूजुअली इतना कुछ क्वेश्चन होता नहीं है if it's in 2 different years, academic years. So you just need to make sure that your 2 degrees are in 2 academic years. एक साल का गैप हो सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. Nobody usually will question you कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ. तो that's going to be a done situation, and also a win-win situation for you. And of course, after doing your MBA and masters in psychology, you can also opt out for organizational psychology, which is going to be quite a nicely paid profession. So yes, that's one avenue which is going to be open for you once you wind up your once you wind up your MBA in MBA, as well as have your मास्टर्स इन साइकोलॉजी. बट आई वुड रेकमेंड कि कुछ एक कर लो. आई मीन दोनों की डिग्री का जो वो है लेवल है, इट्स द सेम. Like you're doing masters also, you're doing MBA also. So what I would suggest is that you can choose any one of it and go ahead with that. That can also be, decided, and accordingly you can take a step accordingly. Okay. Is there any other question that you people want to pop out? Anything that you want to ask me, we can discuss. I'm open, as I said, for all sorts of conversation, all sorts of communication. Is there any particular video? Is there any particular topic on which you would want me to make a video? Please go ahead, shoot your opinion, shoot your point of views, and I'm definitely going to take it into consideration and try my best to come up with that. And Amika पूछ रही है कि ma'am, are you planning about term 2? I will be planning about term 2. मतलब कि I have a bunch of sample papers with me, as I said, and I have plans कि मैं वो sample paper in my coming videos करूँगी disclose, और किस तरीके से attempt करने हैं long questions के answers या short questions के answer, यानी 2 mark हो गया या 5 mark हो गया, उनको किस तरीके से attempt करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब मैं आने वाले टाइम में एक्सप्लेन करूंगी. दिस इज व्हाट आई हैव थॉट ऑफ कि आई मीन दिस इज माय प्लान ऑफ एक्शन फॉर टर्म 2. ठीक है, बट अगर इसके अलावा कुछ और आपको लगता है कि करना चाहिए या कुछ और सजेशंस हैं फ्रॉम योर एंड, फील फ्री, गिव इट टू मी सो दैट मैं उसके बारे में भी आई कैन ब्रेनस्टॉर्म एंड थिंक अबाउट इट. ओके. नितिन पूछ रहा है कि MA साइकोलॉजी करने के बाद PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग करने से कहाँ से बेस्ट होता है? इंस्टीट्यूट में क्या खास बातें होनी चाहिए? मैं इंदौर में रहता हूँ. ओके, सो यूजुअली एक चीज आपको देखनी है कि वो जो भी जगह से आप कर रहे हो वो एक अफिलिएटेड जगह हो, यानी कि वो ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो कि CBSE से अप्रूव्ड हो, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट ना हो. इस चीज की आपको पहली बात इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, वो आपसे पैसा ले लेते हैं और उनकी जो डिग्री होती है उसकी इतनी ज्यादा मार्केट में वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो यही है कि कोई भी अच्छा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो आपके आसपास हो और जो UGC से अफिलिएटेड हो,
आपको वहीं से अपना कोई एक पीजी का डिप्लोमा करना है। अगर आप वो कर लेते हो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की और फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप अगर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो, आप स्कूल में काउंसलर बनना चाहते हो तो उसके लिए भी एलिजिबल हो, आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हो फिर उसके लिए भी एलिजिबल हो। और इस तरह से कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको काफ़ी मान्यता मिलती है। ठीक है। मेरा सजेशन यही होगा, जो बेस्ट क्वालिटी आपको देखनी चाहिए वो यही है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो सरकारी इंस्टीट्यूशन हो और गवर्नमेंट से अफिलिएटेड हो, यूजीसी से अफिलिएटेड हो या जो भी एक जो गवर्नमेंट बॉडी है वहां से उसको अफिलिएशन प्राप्त हो। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू फॉर योरसेल्फ। ठीक है नितिन। वंशिका कह रही है हाय, currently what are doing in the field of psychology? What, I didn't get the question, Vanchika. Could you please rephrase your question? Harshita is saying hi. Ishika is saying, do we need to do PhD for RCI license or MPhil? Still valid. MPhil is absolutely valid, Ishika. You do not require PhD. Anyways, PhD के बाद आपको कोई license number वैसे भी नहीं मिलता है. तो अगर आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, एनीवेज देर आर अ फ्यू कोर्सेज जहाँ पे आपको इनरोल करना पड़ता है. इफ यू डोंट वांट टू इनरोल योरसेल्फ फॉर द कोर्सेज, यू वांट टू गो अहेड विद द राइट वे, जहाँ पे आपको रिन्यूअल के लिए कोर्सेज को रिवाइज नहीं करना पड़ता, वो है आप एमफिल करो. एंड एमफिल इज एब्सोल्युटली वैलिड टिल डेट. ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर ऑल्सो. अनामिका कह रही है या यस अनामिका, वी विल बी डूइंग दैट. हर्षिता मैम मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मैं साइकोलॉजी में बीए करूँ या बीएससी, एंड मैम प्लीज टेल मी अबाउट नाउ what will be the procedure for taking admission in psychology colleges. ठीक है. So Harshita, if you are a part of एनीवेज दो तरीके होते हैं कहीं पे भी एडमिशन लेने के, मैं दोनों की ही बात कर लेती हूँ. और बी ए करोगी या बीएससी करोगी, दोनों से ही कोई प्रॉब्लम तुम्हें फ्यूचर में नहीं आने वाली है. सो प्लीज गो अहेड विद जो भी ऑप्शन तुमको मिल रहा है इन अ बेटर कॉलेज. ठीक है, दिस इज आंसरिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन. कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, कहीं भी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के दो तरीके होते हैं. एक होता है मेरिट बेसिस पे और दूसरा तरीका होता है आपका एडमिशन लेने का ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ठीक है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आज तक मेरिट बेसिस पे एडमिशन्स होते थे जहाँ पे कट ऑफ रिलीज होती थी. कट ऑफ्स आर क्वाइट हाई. आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट देयर आर मेनी अदर यूनिवर्सिटीज जहाँ पे एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन्स होते हैं, जैसे कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जैसे कि बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर जो है कट ऑफ के बेसिस पे जहाँ पे जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे एडमिशन्स होते हैं. यानी कि आपको उनका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो लिखना पड़ता है. वहाँ पे आप जब पास करते हो, क्लियर करते हो, उसके बाद आपको वहाँ पे सीट्स में एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेस पे एडमिशन लेने पे, आई मीन डेफिनेटली वंस यू क्वालिफाई फॉर द क्राइटेरिया, वहाँ पे आप एलिजिबल होते हो एडमिशन लेने के लिए. सो दिस इज हाउ इट यूजुअली वर्क्स. ठीक है. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज तक मेरिट पे हो रहा था, बट इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है कि हम अगले साल से हम भी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम अनाउंस कर दिया है जिसके बेसिस पे हम एडमिशन्स देंगे, सो दैट ये जो भसड़बाजी है, जो ये 100% कट ऑफ चली गई है, 99% कट ऑफ चली गई है, इस प्रेशर को बच्चों के दिमाग से कम किया जा सके. बिकॉज दिस इज actually taking a toll on a lot of children and they're actually coming under a lot of pressure because of this reason. Okay, I hope that helps. Harshita, uh, how to get RCI certificate? RCI certificate लेने के दो तरीके होते हैं. One, you do registration number, RCI number. One, you do MPhil. Two, there are a certain certified courses that you do and उसमें आपको कुछ मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ते हैं और उन मार्क्स को आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स यू हैव टू रिव्यू और रिन्यू, नॉट रिव्यू बट रिन्यू. इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपके साथ इंटैक्ट रहता है. सो that's quite a process. I'm not very well aware of those courses जिसको करके आप RCI registration number obtain कर सकते हैं, but there are two ways you can do that. Rishabh, scholarship SAI America
पढ़ाई करना है बट वहाँ जॉब नहीं करनी साइकोलॉजी में, और साइकोलॉजिस्ट बनना है क्या? 2-3 लाख मंथली इनकम होगा। I did not understand, Rishabh. Is it a question or is it a suggestion? Like, please clarify yourself. Vanshika कह रही है, मैम PG diploma in guidance and counseling. Okay, PG diploma in guidance and counseling, can we do it in distance mode? I don't think, Vanshika, distance mode पे कोई ऐसे institutions हैं जहाँ से करवा रहे हैं, but usually उनको prefer भी नहीं किया जाता, so I don't think you should do that. वीडियो सेव रहेगा ना? हाँ नितिन, वीडियो विल बी सेव्ड। मेरे चैनल पे जाओगे, लाइव वीडियो के सेक्शन पे जाओगे, वहां पे ये वीडियो ऑलरेडी सेव रहेगा, सो डोंट वरी, आप बाद में भी देख सकते हो। हर्षिता, सो मैम अब जो सेकंड पार्ट होगा वो डोमेन स्पेसिफिक होगा। हाँ, सो यस, सो अभी क्लैरिफाई हुआ नहीं है, बट या सर्टनली उन्होंने यही कहा है कि जो पार्ट 1 होगा वो जनरल एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन होगा, और सेकंड जो होगा वो स्पेसिफिक टू जिस भी सब्जेक्ट के लिए बच्चा एडमिशन सीख करना चाह रहा है उसमें होगा। तनीश इज सेइंग हेलो, हेलो तनीश। स्कॉलरशिप से अमेरिका पढ़ाई करना है बट वहाँ जॉब नहीं करनी। स्कॉलरशिप से पढ़ाई करना तो ठीक है, बट वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग तो तुम्हें बेयर करनी पड़ेगी ना, एंड द अमाउंट ऑफ मनी यू वुड स्पेंड इन अमेरिका, आई डोंट थिंक यू कैन एक्चुअली मेक दैट अमाउंट ऑफ मनी बैक इन इंडिया। सो ऋषभ, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। मतलब अमेरिका पढ़ाई करने जाना चाहते हो कि मस्ती करने चाहते हो? वो दैट्स योर चॉइस एंड डिसीजन। Is it necessary to do PhD after MPhil in psychology if someone wants to become a clinical psychologist? Not at all. After MPhil, you become a clinical psychologist. मेरे पास 11th और 12th में साइकोलॉजी नहीं थी, सो अब मैं क्या करूं एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट? क्या सिर्फ 11th और 12th की साइकोलॉजी सफिशिएंट है या एक्स्ट्रा भी करना होगा? ओके, सो 11th-12th की साइकोलॉजी इज सफिशिएंट, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सर्टनली वो एक थोड़ा सा अपर एज उन लोगों के लिए आएगा जिन्होंने 11th-12th में साइकोलॉजी पढ़ी है, क्योंकि अभी तक जब मेरिट बेसिस में एडमिशन हो रहे थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपके पास है कि नहीं है, यू जस्ट नीडेड टू हैव दैट लिटिल एक्स्ट्रा परसेंटेज अभी तक, ठीक है। बट ऑफ कोर्स अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक सेटअप बनता है तो जब डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम होगा तो उसमें आपको एक्स्ट्रा उसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, या सो देन इट माइट अफेक्ट यू। सो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स या किस तरीके से एग्जाम होगा या क्या होगा उसकी एक जानकारी लेना थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा। सो श्वेता गर्ग इज सेइंग थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तनीश विश्वकर्मा, आई एम वेरी वेल तनीश, थैंक यू फॉर आस्किंग मी, हाउ आर यू डूइंग डियर? ऋषभ कह रहा है स्कॉलरशिप लेकर यूएस में पढ़ाई करनी है बट वहाँ नौकरी नहीं करनी है। मैं समझ चुकी हूँ आपका सवाल और आपके सवाल का जवाब भी मैं दे चुकी हूँ। आई होप you understood what I wanted to say. नेट और जीआरएफ के बारे में बताना। ओके, सो नेट और जीआरएफ, जेआरएफ होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जीआरएफ नहीं होता, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, सो फर्क ये है कि ये दोनों ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नॉट रियली एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आई वुड से, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि नेट देने के बाद यू आर एलिजिबल, और हालांकि पीएचडी के बाद भी कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पर अभी भी नॉट अभी भी बट आफ्टर डूइंग योर पीएचडी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एज अ प्रोफेसर काम कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सच एज दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जयपुर यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आपको या गवर्नमेंट बॉडी में अगर आपको काम करना है तो वहां पे आपको नेट क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है अलोंग विद योर पीएचडी डिग्री। ओके, JRF, which is called Junior Research Fellowship, is basically again an entrance examination for the research under the government body, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको DU के अंदर रिसर्च करनी है तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो एग्जाम होगा उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, सॉरी पीएचडी के करने के लिए एलिजिबल होते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडी। अदरवाइज प्राइवेट में तो आप कर ही सकते हैं।
ठीक है? That's a very good question, Shiv. I think nice. I hope that helps. Ma'am, what are you doing currently in the field of psychology? And please give suggestions based on your experiences in the field. So, Vanshika, I am currently into teaching and counseling. Okay, uh, I'm more inclined towards teaching. That's something that I thoroughly enjoy, and that's the reason I have made this channel. And you can see, I'm taking care of lots of questions which are associated with that. Okay, so मेरा inclination personally teaching के ऊपर है, but counseling is also something that I do take up occasionally. That's not something that I passionately love doing, to be very honest. And my experience in the field of psychology has never been bad. Okay, I have been following psychology for a really longest period of time in my life, and I enjoyed it. Certainly, when I started, things weren't, um, you know, people weren't much aware of the subject. इतना awareness नहीं था, इतना knowledge नहीं था, इतना craze नहीं था recently. तो I mean, everyone that you see around you is trying to get admission in psychology, wants to become a psychologist, wants to become a counselor, but that wasn't the case back when I started. So, to be honest, I'm quite happy, I'm quite content, I'm quite satisfied with what I'm doing and how I'm doing in my life. Harshita saying thank you so much. You got most welcome, Harshita. Dinesh, आप गलत समझे मैम. मैं ये बोल रहा हूँ कि एज अ करियर साइकाट्रिस्ट कैसी जॉब है. Psychiatrist is a very well established job and it is done through NEET, Tanish. So you need to understand there's a difference between psychiatrist and psychologist. Okay. I mostly here talk about psychologist, not psychiatrist. So if you're intending to go for a psychiatry, that's certainly a better paid job because that's from a medical field. So you have to give your NEET, you have to do your MBBS, you have to do your MD. So more effortful, more hardworking and everything, and certainly better paid job compared to psychologist. ठीक है. बाकी अगर आपको इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, कितना उनका सैलरी है, इट ऑल वेरीज. एंड आई हैव मेड सो मेनी वीडियोस कि अगर आप काउंसलर हैं तो कितना कमा सकते हैं, अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो कितना कमा सकते हैं. सो यू कैन गो वॉच इट ऑन माय वीडियोस, यू विल गेट टू सी स्पेसिफिकली सबका क्या सीन रहता है, क्योंकि सबका सैलरी ब्रैकेट अलग होता है, बट सर्टनली कोई 2-3 लाख इंडिया में नहीं कमाता है. दिस इज अ वेरी क्लियर फैक्ट. Aryan, ma'am, can you please make a videos on class 12 for I will make a video, Aryan, on the questions. Okay, this is something that I will be doing super soon. So wait for the videos. You will get to have a lots and lots of exposure about how to go about your term 2 examination. But certainly going on a chapter wise thing is something which is a very difficult task for me. So I may not be able to come up with that. नेट के लिए मैम तैयारी कैसे करें, फर्स्ट ईयर में है. ओके, सो नेट का भी ना सिलेबस रिलीज होता है एंड आप आराम से उस सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई कर सकते हैं. कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. सर्टनली जब आप एमए के सेकेंड ईयर में आ जाओगे, यू आर एलिजिबल फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन नेट एग्जामिनेशन. गिव योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ट्राई करके देखो कितना डिफिकल्ट, कितना हार्ड लग रहा है. और फिर भी नहीं होता है तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो नेट की कोचिंग देते हैं, तो यू कैन जॉइन दैट एज वेल. Do you think dual undergraduate courses in law and psychology would be a good option? Not at all a good option. You cannot show 2 degrees at the same time, Akanksha. So please don't waste your time and energy on that. To yeah, psychiatry is a very good career. It's booming. Let me tell you very clearly. Okay, and we need more and more psychologists who are actually good. So yes, it is a good option as per my point of view. Mama, please एक recap करवा दो psychological disorder. Okay, maybe Ilyas, maybe on some live session day we can do that, है ना? But देखते हैं. I'm not very sure, but I will certainly take your suggestion into consideration. So thank you so much.
साइकोलॉजिस्ट मंथली कितना कमाते हैं इंडिया में? इट वेरीज, इट कम्प्लीटली वेरीज. देयर आर पीपल हु आर मेकिंग पीनट्स ऑल्सो, मतलब बेचारे 10,000 भी कमा रहे हैं. देयर आर पीपल हु आर मेकिंग क्वाइट बिग मनी एज वेल. सो इट वेरीज. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में साइंस का बैकग्राउंड से होना जरूरी होता है? नॉट एट ऑल. साइकोलॉजिस्ट, सो मैम आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से केस study based related again videos. Okay, Kashvi, I understood what you wanted to say. I will try my best to come up with a case study video from different sections of the term 2 examination portion. ठीक है. अनामिका कह रही है मैम जनरली लोग कहते हैं कि you are studying psychology then you tell us what. Yeah, I made a video on that as well. So just ignore such people. मैम आप हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाती? आई थिंक हिंदी में बनाना से आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ेंगे. हिंदी मेरा जो कम्युनिकेशन है वो मैं बायलिंगुअल रखती हूँ, हिंदी भी रखती हूँ और इंग्लिश भी रखती हूँ जब मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ तो, क्योंकि जो कई ऑडियंस ऐसी है जो बिल्कुल परफेक्ट हिंदी वो समझ नहीं पाएगी और कई ऑडियंस ऐसी है जो परफेक्ट इंग्लिश में नहीं समझ पाएगी. इसीलिए मैं ऐसे बीच का वो लेके चलती हूँ जहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बात करती हूँ इन माई सेशंस. तो आई मीन मैं जिस तरह से बात करती हूँ वो तो समझ आना लाजमी है, किसी को भी आ जाएगा आराम से समझ. बहुत डिफिकल्ट तो होता नहीं है, बट कोशिश करूंगी कि आने वाले वीडियो में हिंदी में कंपैरेटिवली ज्यादा बात करूँ इंग्लिश के मुकाबले. ठीक है. आई थिंक ये वाला फेज, आई मीन जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ वो तो चलेगा ना, तो उसी तरीके से मैं कोशिश करूंगी आने वाले टाइम पे बात करने की. ठीक है. मैम DSSB काउंसलर वैकेंसीज में मास्टर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम डिस्टेंस. देखो अब मैं ऑनेस्टली एक चीज बताती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट बॉडीज होती है ना वहां पे अगर आप डिस्टेंस से जो एजुकेशन अटेन करते हो ना उसकी इज्जत जरा कम होती है. ये है दुनिया की कड़क सच्चाई. ठीक है. सो कोशिश करो कि अगर आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट बॉडीज में कहीं पे भी अप्लाई करना है तो आपके पास जो एजुकेशन है वो एकदम अप टू द मार्क है, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ एक सिनेरियो ये होता है कि ये लोग अपने क्राइटेरियाज को लेके बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं. अगर इन्होंने कोई चीज सोच के रखी है सो दे आर गोइंग टू फॉलो द सेम पैटर्न. मतलब कि अगर आप इंच भी इधर से उधर हैं तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं. ठीक है. सो मुझे नहीं लगता है कि वो जो है कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग वाले स्टूडेंट्स को फॉलो करेंगे, प्रेफर करेंगे. और वैसे भी इतना कंपटीशन होता है, इतने बच्चे अप्लाई मारते हैं कि बहुत कंपटीशन हो जाता है. बाइलिंगुअल इज बेस्ट. यस अनामिका. तनीश सिंह आपका नाम रोशन करना है मेरे को तो एम्स जाएंगे और वहीं से साइकियाट्रिस्ट कंप्लीट. वाओ, साइकियाट्री कंप्लीट करूंगा. वेरी नाइस यार, वेरी नाइस तनीश. दैट्स गोइंग टू बी वंडरफul. I know a doctor who's been practicing in AIMS and I'm quite nicely associated with him. He's an doctor, ex-resident of AIMS. That's going to be wonderful. So best wishes from my end. Ma'am, I will soon pursue BA Psychology in Canada. Can I do MA Clinical Psychology? But I have art stream. Can I do this? Yes. Is clinical psychology degree available in BA also? Yeah. कोई problem नहीं. आराम से. Everything is possible, Arun. So not at all. There is no issues. Best wishes from my end. I hope you do very well. And I hope you enjoy the weather in Canada as well. So I think I've had a great time today conversing with all of you after such a longest period of time. Guys, if you're not following me on my Instagram, you can quickly go and check out my Instagram handle, which is @Unlock Psychology. And do take care of yourself. मैं आप लोगों से जल्दी लाइव मिलूंगी and I will try my best कि मैं फटाफट से आप लोगों के लिए टर्म 2 के जो एग्जाम पैटर्न्स हैं, जो पोर्शंस हैं या जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए डालूं सो दैट आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने को मिले इन द कमिंग टाइम. ओके. सो आज के लिए बस इतना ही. आने वाले टाइम के लिए जो भी आपके सजेशंस रहेंगे आप उन्हें लिख सकते हैं और मुझे भेज भी सकते हैं. ठीक है. नितिन कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच नितिन. मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही खुशी मिली है.
एंड इट्स सो नाइस टू मीट ऐसे लोगों के साथ जो इतने सिंपल और इतने एक्सप्रेसिव होते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू नितिन फॉर बीइंग देयर. Most welcome, Anamika. Hi, Mehak. It's time for me to go. But thank you guys for joining me, and I'm going to see you all soon. And do take care of yourself. Watch my videos and like करते रहो, subscribe करते रहो. बहुत सारा प्यार देते रहो. Comment भी करो यार. आजकल comment कम करते हो तुम मेरी videos पे. Okay, do comment on my videos as well. चलो, bye. Take care.